Good morning students. In previous lecture we discussed about sexual reproduction and characteristics of sexual reproduction, and today we discuss about sexual reproduction in flowering plants. In flowering plants. First of all, I tell you about four parts of flower. First one is sepal, second one is petal, third one is stamen, and fourth one is carpel. Now we discuss this one is flower, and the outermost part of flower is known as sepal. This one is sepal, and these colorful part of flower that are known as petals, and these are made of two components that are known as stamen, and this one part is known as pistil, and we also called carpel. These four parts of flower. First one is the flower consists of four parts. First one is sepals. Sepals. Second one is petals. Third one is stamens, and fourth one is carpels. Carpel also known as pistil. And sepals and petals both are accessory part of flower, and that are not help in reproduction. But third and fourth part, stamen and carpels, that are known as reproductive part of flower, that helps in the reproduction, and stamen and pistil, carpel, that produce germ cells that help in the sexual reproduction. Is it clear beta? Again I tell you about sepals. Sepals is the outermost part of flower. ये flower का सबसे outermost part होता है, that is known as sepal, and that are green in color. और green color के हैं that help in photosynthesis, और photosynthesis करने में help करते हैं, helps in photosynthesis. And one thing more I tell you about, one is sepal, and the whorl, all surrounding parts of all sepals, they form a whorl around a flower, around a thalamus, that is known as calyx. That whorl means मतलब चारों ओर, वो फ्लावर के चारों ओर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, उस ऊपर एक वर्ल बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस पूरी वर्ल को केलेक्स. नेक्स्ट वन इज पेटल्स. पेटल्स आर कलरफुल, जिसको हम पंखुड़ियाँ भी बोलते हैं. दीज आर कलरफुल, एंड दैट हेल्प्स इन टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में ये हेल्प करते हैं. और इंसेक्ट्स किस लिए हेल्प करते हैं फ्लावर की? पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन. दी पेटल्स आर कलरफुल एंड दैट हेल्प टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. और the whorl of petals are known as corolla. And third part is known as stamen. Stamen is a male reproductive part.
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट लाइक दिस. दीज आर, this one is filament and this one is anther. और एंथर बायलॉब्ड होता है और बीच में क्या होता है, कनेक्टिव. दिस वन इज कनेक्टिव. स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और दैट प्रोड्यूस जर्म सेल्स की प्रोडक्शन करता है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट. वन इज फिलामेंट एंड अपर पार्ट इज नोन एज एंथर. एंड एंथर इज बायलॉब्ड, मतलब 2 लोब्स बनी होती हैं. ईच लोब इज सेपरेटेड बाय कनेक्टिव. एंड इनसाइड द एंथर मेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस. दीज आर नोन एज पोलन ग्रेन्स. और जो इनके अंदर एंथर्स के अंदर मेल जर्म सेल्स बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स. सो मेल गैमीट्स in flower that are known as pollen grain. Male germ cell is also known as pollen grain. Is it clear beta? Male reproductive part. Next one, pistil carpel, that is known as female reproductive part. Female reproductive part, and it consists of three component. One is ovary. like ovary, ये क्या है, ovary है, देखो ovary. This one swollen part is known as ovary. This one is style और this one is stigma. Female reproductive part. Lower part is swollen part. Lower part is known as swollen part. That is known as ovary. Long tubular part, that is known as style. And tip of pistil, that is known as stigma. And inside the ovary ovules are present, and inside the ovule egg is present. Egg is known as female germ cell and female gamete. उस egg को हम female gamete बोलते हैं और female germ cell बोलते हैं. Is it clear beta? Next one, I tell you about unisexual flower and bisexual flower. Next term, I tell you about unisexual flower and bisexual flower. Unisexual flower क्या होता है? Is that flower in which one reproductive organ is present. Reproductive एक ही organ present हो, like that either stamen और pistil. स्टेमन और पिस्टिल में से एक पार्ट ही प्रेजेंट होता है जिस फ्लावर के ऊपर, उस फ्लावर को बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर. लाइक पपाया, वाटरमेलन. पपाया में क्या होता है, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है. हर प्लांट के अंदर जो भी पपाया प्लांट होता है, या तो उसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट होंगे उसके फ्लावर में, या क्या प्रेजेंट होंगे, पिस्टिल प्रेजेंट होंगे. दैट फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल flower. Example is papaya and watermelon. And next one is bisexual flower. Bisexual flower is that flower in which both reproductive organs are present. Both stamen and pistil are present. That are known as bisexual flower. Like that मस्टर्ड, ब्रासिका बोलते, मस्टर्ड, सरसों, ब्रासिका फ्लावर के अंदर भी क्या होता है कि दोनों स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होते हैं. सो
मस्टर्ड होता है सरसों, सरसों। और एक और एग्जाम्पल है हिबिस्कस, रोज फ्लावर। hibiscus, that is known as bisexual flower. Is it clear beta? Again I tell you about flower consists of 4 parts. One is sepal, second petal, male reproductive part stamen, female reproductive part is known as pistil, we also known as carpel. And again sepal is green in color and help in photosynthesis. Its whorl is known as calyx. And petals are colorful to attract the insects for pollination, pollination के लिए attract करते हैं. And its whorl is known as corolla. Third part is stamen. Stamen is a male reproductive part. It consists of 2 components. One is filament, and top of filament anther is present, and inside the anther male germ cells are produced that are known as pollen grain, and its whorl is known as एंड्रोशियम. इसकी वर्ल को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम. एंड नेक्स्ट वन कार्पल. कार्पल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट कंसिस्ट ऑफ ए 3 कंपोनेंट. ओवरी, lower part, swollen part is known as ovary, tubular part is known as style, and tip of pistil, that is known as stigma. And inside the ovary ovules are present, and inside the ovules egg is present. Egg is known as female gamete and female germ cell. उसे हम female germ cell बोलते हैं और female gamete भी बोलते हैं. And whorl of carpel, whorl of pistil is known as gynoecium. उसे हम gynoecium बोलते हैं. Now next I tell you about unisexual flower and bisexual flower. Unisexual flower is that flower in which one reproductive organ is present, either stamen or pistil. या तो stamen present होंगे या pistil present होंगे, एक present होगा, that is known as unisexual flower. Example papaya, watermelon. And bisexual flower is that flower in which both reproductive organs are present. Reproductive organs like stamen or carpel, both are present in the same flower, that are known as bisexual flower. Example mustards and hibiscus. Is it clear beta? Next we discuss about pollination. Next we discuss about pollination. What do you mean by pollination? The transfer of pollen grains. एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स. जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे अटैक करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. लाइक दैट ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, और पोलन ग्रेन एंथर से anther wall is ruptured and pollen grains are released, and pollen grains then attack on stigma. That process is known as pollination. The transfer of pollen grain from the anther to stigma of a pistil, that process is known as पोलिनेशन. जब एंथर वॉल रैप्चर हो जाती है, पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं तो एंथर वॉल रैप्चर होती है, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, एंड थ्रू द वाटर, थ्रू द विंड, थ्रू बाय द इंसेक्ट्स, बाय द एनिमल्स, दीज पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of a pistil. That process is known as pollination. And 2 types of pollination. First one is self pollination,
एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल ऑफ ए सेम फ्लावर या वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट। एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में इस टाइप की पॉलिनेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अगेन आई रिपीट, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के, मतलब एक ही फ्लावर के एंथर हैं और एक ही फ्लावर का स्टिग्मा है, उसी पे ही फोल्ड डाउन हो जाए एक सेम फ्लावर में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और यदि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी वो ट्रांसफर होते हैं पर सेम प्लांट में होते हैं, सेम प्लांट, ध्यान रखना है, सेम प्लांट में हो तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट। एक फ्लावर के क्या है, एक फ्लावर के, एक प्लांट के एंथर हैं, एंथर में से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, पोलन ग्रेन्स हैं, और किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे वो फोल्ड डाउन हो जाते हैं, वो क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। इज इट क्लियर बेटा? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। इज इट क्लियर बेटा? नाउ आई टेल यू अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। किसके थ्रू ये पॉलिनेशंस होती है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। The pollination takes place by water के थ्रू, by air, विंड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बाय बर्ड्स, बाय इंसेक्ट्स, जैसे हनी बी है, वो क्या करती है, नेक्टर के लिए फ्लावर पे जाती है और उसकी बैक पे क्या शेड ऑफ हो जाते हैं, पोलन ग्रेन। फिर वो नेक्स्ट फ्लावर पे विजिट करते हैं और वहीं पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, शेड ऑफ कर देते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन होती है। कई वाटर प्लांट्स होते हैं, वाटर के अंदर मेल जर्म सेल्स को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, स्टिग्मा पे अटैक कर जाते हैं वो। और कहीं विंड के थ्रू, कहीं पोलन ग्रेन हवा की गति के साथ ही अपने साथ मूव कर जाते हैं और किसी स्टिग्मा पे फॉल डाउन हो जाते हैं। सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, वाटर, एयर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट व्हाट हैपन आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन अटैक ऑन स्टिग्मा। आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन फॉर्म ए पोलन ट्यूब। इन स्टाइल के अंदर वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं इस तरह से। देखो मैं बड़ा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। Like this, pollen grain attack on stigma, then they form pollen tube। इस तरह से pollen tube की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और pollen grain pollen tube के अंदर दो मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाते हैं। दे फॉर्म ए 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या है, एव्यूल्स हैं,
और इसमें क्या पड़े होते हैं, एग प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से एव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है ये, एंड वन इज एग सेल और pollen tube enter and they transfer the male gamete from stigma to inside the ovary. They enter and they release male gamete and male gamete fuse with female gamete. That process is known as fertilization. When male gamete fuse with female gamete, that process is known as fertilization. Again I tell you about after pollination, the pollen grain form a pollen tube. ये क्या होती है, pollen tube. Inside the pollen tube, pollen grain divide and to form two male gamete and one male gamete fuse with the egg cell. egg cell भी बोल सकते हैं, फीमेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं, फीमेल गमीट भी बोल सकते हैं, सेम थिंग। फीमेल गमीट के साथ फ्यूज होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विद फीमेल गमीट, दैट प्रोसेस इज नोन एज fertilization. After pollination, pollen grain form pollen tube enter into the embryo sac या enter in the ovary and they transfer the pollen grain inside the ovary. Then female gamete fuse with male gamete and they form zygote. जब मेल और फीमेल गमीट फ्यूज होते हैं तो एक सेल बना लेते हैं जिस सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, व्हाट इज द फेट ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन, ओवरी, एव्यूल, इनका फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फेट ऑफ flowering parts after fertilization. After fertilization, ovary change into fruit. फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, एव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स। सेपल, पेटल, स्टेमन्स, these are shadows. Sepals, petals and stamens, shadow and fall off। शेडो ऑफ भी लिख सकते हैं और फॉल ऑफ भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा। देखो अब जो सीड है, यदि हम दैट सीड इज पुट इनटू द मॉइस्ट सॉइल and under appropriate condition, under favorable condition, these seed germinate and to form a new plant. That process is known as germination. Again I tell you about ovules convert into seeds and these seeds emerge inside the moist soil. Under favorable conditions, under appropriate condition, these seed germinate and to form a new plant. That process is known as germination. Next step is germination. When
seed emerge into the moist soil under appropriate condition, seed convert into new plant. That process is known as germination. Is it clear? And like that seed diagram, this upper part is known as plumule. This is the seed, डायकोटिलेडन सीड. नाइन्थ में आपने पढ़ा था जो 2 कोटिलेडन सीड्स होता है, जैसे चने हैं, वो पी है, मटर के दाने, वो क्या होता है, डायकोटिलेडन होते हैं. 2 कोटिलेडन होते हैं. कोटिलेडन होते हैं जो फूड को रिजर्व करते हैं, ठीक है. और जब हम इसको मॉइस्ट सॉइल में डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसके स्प्राउट्स हो जाते हैं, स्प्राउट्स आउट हो जाते हैं, जिससे वो जर्मिनेट करते हैं. जो उसका अपर पार्ट होता है दैट इज नोन एज फ्लेम्यूल, और जो लोअर पार्ट होता है दैट इज नोन एज रेडिकल. दैट इज नोन एज रेडिकल. एंड प्लेम्यूल कन्वर्ट इनटू फ्यूचर शूट. मतलब जो प्लेम्यूल पार्ट होता है वो स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, शूट में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन सीड इज जर्मिनेट. ठीक है. प्लेम्यूल कन्वर्ट इनटू फ्यूचर शूट एंड रेडिकल कन्वर्ट into root. Is it clear बेटा? और जो रेडिकल पार्ट होता है वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है. Thanks for watching. In next video we will discuss about sexual reproduction in human beings.